हेलो गाइस, वीडियो। तो आज हम करने वाले शिवाजी महाराज के फेस में शेडिंग, जो ये पार्ट है आईज नोज, ये वाला पार्ट वहाँ पर अपन शेडिंग करने वाले हैं। तो हाँ, इस जगह अपन शेडिंग करने वाले हैं। तो ये रेफरेंस फ़ोटो है, इसको देख लो। तो हम शेडिंग करने वाले पेंसिल से। तो ये पार्ट है कुछ, तो इसमें शेडिंग करेंगे हम। तो शेडिंग करने के लिए हम सिंपल सी आउटलाइन पेंसिल का यूज़ करेंगे और ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग ब्रश और टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला आज की वीडियो में। तो चलो इसमें शेडिंग करते हैं। शिवाजी महाराज की जो फेस है, इनके अंदर शेडिंग करते हैं। तो चलो आ जाओ। तो जब शेडिंग करते हैं, चलो तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले HB पेंसिल से शेडिंग करनी है। फर्स्ट लेयर HB पेंसिल से करनी है। तो HB पेंसिल से शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करते हैं। तो ये शेडिंग करने के बाद जो टिश्यू पेपर है, उससे अपन को इसको ब्लेंड कर देना। एकदम सॉफ्टली ब्लेंड होएगा टिश्यू पेपर से, एकदम सॉफ्ट। तो इससे ब्लेंड करना है। तो मैं थोड़ा ये वीडियो है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको एकदम सही से दिख सके। तो जूम कर लिया मैंने। तो अब इसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड करना है। उसके बाद सेकंड लेयर अपन चलाएंगे जो 4B है उससे। तो 4B से अपन सेकंड लेयर चलेंगे, जहाँ पर भी आपको डार्क पार्ट दिख रहे हैं रेफरेंस फोटो में। और रेफरेंस फोटो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये डार्क पार्ट आपको जो भी दिख रहे हैं इसमें रेफरेंस फोटो में, तो डार्क पार्ट को अपन 4B से ड्रॉ करेंगे। तो डार्क पार्ट को 4B से ड्रॉ करने के बाद जो ये इरेजर है, मोनो 0 इरेजर, तो इससे अपन को जो हाईलाइट्स दिख रहे हैं वो हाईलाइट्स ड्रॉ कर लेना है। तो हर एक जो हाईलाइट एकदम सही से ड्रॉ करना है अपन को रेफरेंस फोटो में से देख के। तो अब मैं थोड़ा म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आवे। तो चलो मैं म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना आप। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो। तो म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ मैं। सर पे तिलक दिख रहा है, तो मेरे को नहीं होता इसको क्या बोलते हैं। तो इसको अपन जो ये 8B पेंसिल से शेड करेंगे, तो इसमें करेंगे पेंसिल से। तो अभी ये 8B पेंसिल से इनकी जो आईब्रोज है इसमें भी कलर करेंगे। जो भी आपको ये हेयर दिखेंगे ब्लैक एक्स्ट्रा डार्क, तो उसको अपन 8B पेंसिल से करेंगे। तो भाई इनके जो भी ये शेडिंग करेंगे अपन के पूरे फेस में। तो अपन को लेयर वाइज शेडिंग करनी है। तो सबसे पहले HB, फिर उसके बाद 4B से करेंगे। HB और 4B का यूज़ करेंगे अपन पूरे फेस में शेडिंग करने के लिए, और 8B का तो हाईलाइट के लिए मोनो 0 इरेजर का यूज़ करेंगे। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
तो गाइस अपने जो शिवाजी महाराज की जो ये पार्ट था शेडिंग का फेस में, तो वो पूरा हो चुका है, शेडिंग कर ली अपने फेस में। तो इस पार्ट में अपन को फेस में शेडिंग करनी थी। अगले पार्ट में अपन जो इनकी बियर्ड है, वो जो ये इनका कान है, उसमें अपन शेड करेंगे उनके गले में। तो अगले पार्ट में आप देखना। तो इस वीडियो में भी इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको इसके अगले जो पार्ट है मिल सके। तो अगले पार्ट में अपन ये ड्रॉ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।